Hi Nikhil. Hi, how are you? I'm good. Thank you so much for doing this. It's been while you are creating the content. Yes. How do you look back at your content creation journey? So I started like 10 years back. Started with writing small reviews on Zomato, then opening my own website. And then one day we realized, we need a bigger audience when we opened a page on Facebook. And that time we used to write articles and use pictures. Then in 2016 we realized, I guess no one is reading articles these days and the world is moving towards videos. That's the time when YouTube was really trending. So we pivoted into videos and I was the first channel to do food blogging in Hindi in India in 2016. So I was really inspired by a web series like Chef's Table. Wanted to create content. Didn't knew how to do that, but still wanted to do it. So that's my journey from Zomato to YouTube to Facebook. It's been 10 years now. Nikhil, there are the two kind of food content creators which we can see on social media. Right. One who are reviewing the food, another one who are just means cooking it. In which category do you fit yourself and why? So I see, categories where everyone has put food bloggers into two categories, but there are a lot of categories if we define food. One is the ongoing trend of mukbang where people eat a lot of food. It's trending. People like to watch for whatever reason. They like to watch people eat a lot of meals. And there are food explorers like who visit different parts of the world, India, and I'm in one of them. So I have covered almost every major city in India, cover all the food, and then they are city bloggers like some would be very famous in Delhi or Mumbai or something. Then comes the category where people cook, and there are also a lot of bakery and all these categories. So I cook also. I have a cocktail channel also. I have a cooking channel also. I travel also. So the Pura Bhandar. There's that one realization moment in everybody's life. Okay, I wanna do this. So what was that moment when Nikhil realized I want to do this? Food is going to be my career. I never started food blogging as a career. I was a corporate consultant for brands, banks, and MNCs. And this was like not even a side hustle, it was like a hobby, a passion. I really love food and like to explore more and more. So, was into two boats, one my real estate career, one my blogging. Then 2019 happened. And it was a time when everyone was thinking about their career and everything. But for the content creators, it was a boost in disguise. And everyone in 2019 got a lot of boost. So then when I decided in 2019, this is the time I can leave my main profession behind and jump onto a wagon of a full-time creator. So in 2019, I became a full-time content creator and everything. You are talking about full-time content creation. Content creation is all about number game, the Yes. social media. Yes. Do you feel pressure to stay in that race? I think everyone should be because numbers are something which brands also look at, people also look at, and if you're working and people are not watching, there's no use. You have to analyze your data, how long people are watching. I'm into numbers big time. You have to really engineer your content, seeing कि कितने लोग कितने टाइम तक देख रहे हैं, कहाँ watch time drop हुआ. So I go very detailed into the numbers. If you can't do this thing, then it's something really wrong. And eventually your content will become irrelevant if you don't watch your numbers. Everybody is creating the content. ठीक है, food में भी बहुत है, food influencer. What does it take to stay relevant? कि people will come and watch Nikhil. What is that philosophy? देखो, चाहे कुकिंग हो चाहे आपका एक्सप्लोरेशन हो, इसका ना एक अंत आ जाता है. बिकॉज कितनी इंडियन डिशेज आप कुक कर लोगे, फिर देन जो इंस्टाग्रामर्स और ये सब होते हैं जब इतना कंटेंट डाल लेते हैं, फिर वो कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ जो बोलते हैं ना ह्यूमरस, और वो जो वायरल होते हैं वोडका के पराठे, पूरियाँ डली जा रही है माइक्रोवेव में, एयर फ्रायर में, तो वो इनोवेशन आता है. फूड ब्लॉगिंग में कुछ नहीं होता तो लोग डिफरेंट चीजें करते हैं. बट आई से कि जो वीडियो जो सिटी मैंने आज से मान लो मैं जम्मू गया था 3 साल पहले, जम्मू हैज इवॉल्व्ड एज अ सिटी 3 साल से अब, एंड माय ऑडियंस हैव बीन एडेड. So to stay relevant, you have to stay relevant to the old audience also and to the new audience also, and change your presentation and everything.
So it's a very tricky thing to do. But if you're passionate, you will figure out the right way how to stay relevant. And I would say that do invest in your own channels. What people don't do is they don't upgrade. वो जो आज से 4 साल पहले चल रहा था वो अब नहीं चलेगा. लोगों का टेस्ट, लोगों का नजरिया, इतने सारे आपके वो आ गए हैं कॉम्पिटिशन जो फ्री में वेब सीरीज दे रहे हैं, तो आपको कंटेंट भी अपग्रेड करना ही पड़ेगा तभी आप रेलेवेंट रहो. You know, you talked about Puri Air Fryer. Right. The reel went viral. Different food creators tried it. We did story on that as well. What is your take on that Puri? क्योंकि वो उसकी ट्रेडिशनलिटी तो चेंज कर रहा है ना. इट्स नॉट प्रैक्टिकल. देखो अगर पूरी को देखा जाए, कॉन्सेप्ट क्या है पूरी का? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप पराठा सेकते हो तो सेकने में बहुत टाइम लग जाता है. अगर कोई लंगर देखोगे तो रोटियां नहीं देते, लंगर में हमेशा पूरी चलती है. क्यों? तो जब हजारों लोगों को खाना खिलाना हो ना और जल्दी होना, तो पूरी बनने में जल्दी से काफी सारी बन जाती है. सो अगर आपके घर में 16 लोग हैं और एयर फ्राई में पूरी बना रहे हो तो आपको 24 घंटे लग जाएंगे सबका पेट भरने. तो प्रैक्टिकल नहीं है. मतलब एयर फ्राई की पूरी ठीक है. मतलब इफ यू हैव सम रियली बैड कोलेस्ट्रॉल एंड एवरीथिंग, वी हैव आल्सो मेड इट, अच्छा लगता है. बट वो प्रैक्टिकलिटी की बात है. What is the taste? वो ऑथेंटिक रहता है. ऑथेंटिक तो देखो नहीं रहता बिकॉज फैट गिव्स दैट क्रिस्पीनेस, राइट? तो वही काम एयर फ्राई कर रहा है, उसको मॉइस्चर सुखा रहा है, बट इट डजंट गिव दैट क्रिस्पीनेस. अगर ठंडे होके बात करें तो इट्स बैड. बट ठीक है, आई वुड से रेलेवेंस है कि whoever created that did something very new and it would help some part of the society जो जिनको डॉक्टर ने बिल्कुल ऑयल खाने को मना करा है. You know, so somehow you are reaching to few people, you are helping them. So this is also great. So how much will you rate that creation out of 10? पूरी Innovation में I would say 9 on 10. Innovation तो है, देखो मजा आ रहा है देखने में as a creator. So, मुझे तो देखने में मजा आया. हमने भी वो सेम चीज करके देखी, हमें मजा आया. तो हमें ये देखना है कि लोग देखो, जो लोग कुकिंग चैनल्स देखते हैं वो खाना नहीं बनाते. 90% लोग खाना नहीं बनाते, इनको देखने में मजा आता है. You know, we just see the reel on the social media, on Instagram. Yeah. What is your thought process while creating the content? Anyone creating a content should follow a rule के how can you retain the retainership, because reel आप ऐसे देखते हैं, अगर 5-10 सेकंड में आप इम्प्रेस नहीं कर पाए तो हमें ये होता है कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, ऑडियंस को थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देते हैं. देन ही डिसाइड कि मुझे अपने 70 सेकंड या 80 सेकंड इस रील में इन्वेस्ट करने या नहीं करने. गोज फॉर एवरी लेंथ ऑफ अ कंटेंट. चाहे आप यूट्यूब कर रहे हो, चाहे फेसबुक कर रहे हो, चाहे स्नैप कर रहे हो, फर्स्ट 10 सेकंड शुड टेल द ऑडियंस कि व्हाई ही और शी शुड इन्वेस्ट देयर टाइम इन दिस रील. बट टाइम तो ले रहे हैं हम लोग. No one, they are not paying us, they are watching content for free. Time दे रहे हो, क्या चलती है. तो ये जो स्टार्टिंग के 10 सेकंड है, that's very rare. You can make it or break. So, do you feel content creation is 24/7 job? Yes, it is. It is a 24/7 job because you have to think, plan, and in my company we have around 6 channels. So मेरे लिए तो it's like every day thinking about content only. And yeah, it is. Depends on how. Not every content creation is 24/7. It depends on your, like you have few contents like very big creators. This Gary है, वो साल में एक वीडियो डालेगा, he would still stay relevant because he achieved that. वो पहले भी content कम डालता है. ये है कि आप जितनी आदत डाल दोगे audience को, तो उतनी डल जाए. I would say right now, when there is so much content creation going on. And we have also started with our new channels. We don't post everything. We post a reel 1-2 दिन में. So give quality content, and that is the key in today's time. Do you feel quantity does not have any implication or impact on your content? Quantity. Yeah. For old channels, yes, quantity should be there. For new channels, we are relying more on quality. So how we were talking about content creation being 24/7 job. Yeah. How do you manage your personal life and content creation? Personal life, I think personal life really takes a toll because in a year, 3 months, I am out of my home.
Sleeping in hotels 3 months in a year, it's a long time. Taking X number of flights nationally, internationally. So it goes for a toss. Then I just make sure that for few occasions I am there with my family. So like Diwali, Holi, Karwa Chauth, Valentine's Day, I make sure I'm at home. So you have to take time. Time is something which you need to manage, but you can't have it should matter the people who matter the most. तो टाइम पास वाले जो फ्रेंड्स में वो नहीं रहते तो जिन लोगों के लिए करो उनके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा. You have tasted many dishes across the world, let me say that. Right. Put it in that way. Any weird encounter you have by tasting that dish? In Malaysia, I tasted a frog. He's a vegetarian, he won't like it. अगर आपके पास टेबल पे फ्रॉग आ गया आप खा सकते हैं, मतलब आपको नहीं खाओगे तो वेजिटेरियन है, वो आसान है. बट मलेशिया में क्या है, आपको एक्वेरियम से फ्रॉग चूज करना है, फिर उसके आगे उसको मारेंगे, उसको डी स्किन करेंगे, उसको चॉप करेंगे, फिर बोलते खा लो. अब आपके मन में एक सवाल है, अभी तो बेचारा जिंदा था, मेरे डिनर के चक्कर में बेचारे की जिंदगी खत्म हो गई. तो वो मुश्किल है. बाहर जब आप जाते हो ना तो वहाँ पे की जो फ्रेशनेस के नाम पे जो एकदम से मार के जो खिलाते हैं ना, तो वो थोड़ा बहुत हजम करना मुश्किल है. मैं से इंडिया में भी जितने नॉन वेजिटेरियन है ना, उनके आगे अगर आप बोलोगे ना ये चिकन है इसको अभी मार के आकर खिलाएंगे, वो भी नहीं खाएंगे, बिकॉज वो पैक फूड, वो कमर्शियल फूड में आता है. बट इट्स डिफिकल्ट ईटिंग अ फूड जिसको आपके आगे मारा हो, आपके आगे खत्म करा हो. तो आई वुड से एनीथिंग इन दैट कैटेगरी इज डिफरेंट. You have mentioned the disaster, जो एक weird था. Any wonderful memory you have with the dish tasting? सबसे best. सबसे बेस्ट आउट ऑफ इंडिया और इन इंडिया? Anywhere you can mention that. You have a choice. So देखो, I love right now I love South Asian food a lot. So I tried the hot pots, the sushi, especially the white ramen. The white ramen. If you go to Malaysia again, they don't, because it's a Muslim country and they don't use pork broth. So they use the chicken broth. That's why it's called white ramen, and it's more healthier than the pork broth because it has less cholesterol and everything. So it's something to taste for. I love white ramen. You said that you cook also. Any cooking disaster you have made in the kitchen? Lots, because you can't make an omelette without breaking food. So lots of disaster. जब कुछ नया ट्राई करते हैं ना, सोचते हैं ये ऐसे होगा ऐसे होगा, and dish doesn't turn out good, तो होता है काफी बार. Because I am not a professional chef जिसको ट्रेनिंग मिली हो, learning, doing it, and lot of time. But yeah, I love to cook, I love to bake also. सब कुछ करते हैं, and I make a very good tiramisu. Really? Yeah. Oh, great. So you are inspiration to many in the food business. Who is your inspiration? In food, I think my food is late Shri Vinod Dua ji. उनका शो आता था जायका इंडिया, तो वो जिस हिसाब से फूड को समझाते थे, जिस सिंपलिसिटी से, वो जो कनेक्ट ऑडियंस से बनाते थे, हिंदी भाषा यूज करके, वो अद्भुत. ही इज माय इंस्पिरेशन. You know, there is a trend of culinary-based reality shows. Yeah. What's your take on that? Culinary based. MasterChef. MasterChef. Okay. It will be very specific. I think in India क्या है, MasterChef या कोई भी reality show दिखता इमोशन ही है. मतलब I have seen lot of talented people, lot of training. दिखता, और उसमें देखो बनाने वालों की भी गलती नहीं है. मैं नहीं बोलूँगा कि MasterChef और वो भी ऐसा है, वो कुछ गलत करते हैं. वो वही बेच रहे जो लोग खरीदना चाहते हैं. इन इंडिया पीपल आर वेरी इमोशनल, उनको वो दुख भरी कहानी पसंद आती है, और वो, बट मेरिट शुड बी मेरिट. एंड इवेंचुअली अगर कोई कम्युनिटी करके, कोई इमोशनल स्टोरी करके जीत भी जाता है, तो उसके बाद अगर वो कुछ बड़ा अचीव नहीं करता, राइट, तो वो फिर शो के ऊपर डाउट होता है कि यार इसने कुछ करा नहीं, राइट. अब जैसी रोडीज है, just give me an example. रोडी से आयुष्मान खुराना, बानीचे, रणबीर, that's the platform which has created so many stars. But after MasterChef doing this Instagram, there's a restaurant which is running successfully. There might be few, but I think a person winning that show, and like Australia, it's very serious business. There's no emotion in Australia. You can see good chef like Sarah Todd. So, but मैं फिर बोलूँ कि बनाने वालों की गलती नहीं,
इमोशन दिखेगा तो इमोशन देखना पड़ेगा। You know, one advice you would like to give people in the food business? Start investing in marketing. Don't think about marketing जब रेस्टोरेंट खुलना चल रहा हो। हम वो अपने लाइफ में बोलते हैं ना, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल बंदा कोई चीज़ कर रहा है उसको कॉपी कर लो। ब्रांड्स डू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग। इफ आप छोटे बिजनेस कर रहे हो चाहे बड़ा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप खुद ही रील बनाते हो उसको प्रमोट कर रहे हो, चाहे इन्फ्लुएंसर कर रहे हो, बट डू कीप अ बजट ऑफ मार्केटिंग। आप सोचोगे आप अच्छा खाना बेचोगे और आपके पास ऑडियंस आएगी, इट्स